महाराष्ट्र पर जो फैसला सुनाया जा रहा उसको सुनते हैं। Urged that the order of this court dated 27 June 2022 relied on the decision in Nabam Rebia to injunct the Deputy Speaker from adjudicating the disqualification petitions. This submission cannot be accepted. Although the parties may have addressed this court on the applicability of Nabam Rebia, the order dated 27 June 2022 did not rely on Nabam Rebia to injunct the Deputy Speaker from adjudicating the disqualification petitions on the ground that a notice of intention to move a resolution for his removal had been issued. This court instead granted an extension of time to the persons against whom disqualification petitions were filed to file their written submissions in view of the principles of natural justice. Based on the submissions which have been canvassed before us, we are of the view that the decision in Nabam Rebia merits reference to a larger bench because a substantial question of law remains to be settled. The following are our prima facie reasons for reaching this conclusion. I'll not read out all the reasons for the reference to a larger bench of Nabam Rebia, save and except to note one thing. It appears that the following aspects were not considered in Nabam Rebia. 1. Whether the temporary disablement of the functions of the Speaker under the 10th schedule is prone to misuse by MLAs who anticipate that disqualification petitions will be instituted against them or by MLAs against whom disqualification petitions have already been instituted. And 2. Whether a constitutional hiatus in the operation of the 10th schedule ensues because of the temporary disablement of the Speaker. To give quietus to the issue, we refer the following question and any allied issues which may arise to a larger bench: whether the issuance of a notice of intention to move a resolution for the removal of the Speaker restrains them from adjudicating disqualification petitions under the 10th schedule of the Constitution. Then we have said that pending the decision of the larger bench, as an interim measure, adoption of the following procedure may subserve the objective of the 10th schedule, the symbols order, as well as Article 179C. It may also provide some amount of clarity and certainty. And the points which we have then made for the interim is that the investing of exclusive adjudicatory jurisdiction upon the Speaker to determine the complaints under the 10th schedule will entitle the Speaker to rule upon and decide applications questioning their jurisdiction. B. 1. The Speaker is entitled to rule on applications which require them to refrain from adjudicating proceedings under the 10th schedule on the ground of initiation of a motion for the removal under Article 179C. A Speaker can examine if the application is bona fide or intended only to evade adjudication. 2. If the Speaker believes that the motion is well-founded, they may adjourn the proceedings under the 10th schedule till their decision of their removal is concluded. On the other hand, if they believe, page 61 ko correction hai, if they believe that the motion is not as per the procedure contemplated under the Constitution, read with the relevant rules, they are entitled to reject the plea and proceed with the hearing. And 3. The decision of the Speaker either to adjourn the proceedings under the 10th schedule in view of the pending proceedings under Article 179C or to proceed with the hearing will be subject to judicial review. As the decision of the Speaker relates to their jurisdiction, the bar of a quae time action as contemplated in Quixote Holohan will not apply. Now, having referred the matter to a larger bench, we have given our reasons for coming to the conclusion that we are still dealing with the matter on merits because Nabam Rebia, strictly speaking, did not arise in the matter before us, but we thought Nabam, the controversy, should be settled by a reference to 7 judges. So I'll now go to the what we have said on the merits of this particular case. The House of the People and the legislative assemblies of states are constituted of members directly elected by the electorate. The candidate who secures the highest number of votes is returned to the assembly. The political party which reaches the halfway mark forms government. A coalition of political parties may form the government if no single political party reaches the halfway mark. Articles 75 and 164 provide that the Council of Ministers is collectively responsible to the House of People and the Legislative Assembly of the state respectively. The legislators who are directly elected by the people have a duty to hold the executive accountable on the floor of the House. Legislative procedures serve 2 objectives.
First, they enable deliberation and discussion on the floor of the House to hold the executive accountable, and such deliberation also produces better constitutional outcomes. And second, they create a system to place a check on the exercise of power by the incumbent government. Certain procedural requirements prescribed by the Constitution safeguard constitutional values. This is reflected in Article 368, which prescribes a special majority to amend certain constitutional provisions, which, according to the members of the Constituent Assembly, hold a higher constitutional and democratic value. Certain other legislative procedures further democratic processes and accountability and prevent the concentration of power in the hands of the incumbent government. Article 212 cannot be interpreted as placing all procedural infringements beyond the pale of judicial review. Such an interpretation would completely disregard the importance of legislative processes in a constitutional democracy. Now, we have dealt with the whip as to whether the whip is really a whip appointed by the legislature party or by the political party. And we say to hold that it is the legislature party which appoints the whip would be to sever the figurative umbilical cord which connects a member of the House to the political party. It would mean that legislators can rely on the political party for the purpose of setting them up for election, that their campaign would be based on the strengths and weaknesses of the political party and its promises and policies, that they could appeal to the voters on the basis of their affiliation with the party, but that they can later disconnect themselves entirely from that very party and be able to function as a group of MLAs which no longer owes even a hint of allegiance to the political party. This is not the system of governance that is envisaged by the Constitution. In fact, the 10th schedule guards against precisely this outcome. That a whip be appointed by the political party is crucial for the sustenance of the 10th schedule. The entire structure of the 10th schedule, which is built on political parties, would crumble if this requirement is not complied with. It would render the provisions of the 10th schedule odious and have wider ramifications for the democratic fabric of this country. Thus, the courts cannot be excluded by Article 212 from inquiring into the validity of the action of the Speaker in recognizing the whip. On 25 November 2019, a meeting with the newly elected MLAs belonging to the Shiv Sena was chaired by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the Shiv Sena President, Party President, Paksh Pramukh. The resolution notes that the MLAs unanimously resolved that all decisions in the meeting would be taken by Mr. Thackeray. A resolution was issued appointing Mr. Eknath Shinde as the group leader of the SSLP and Mr. Sunil Prabhu as the chief whip. On 21 June 2022, some members of the SSLP held a meeting under the chairmanship of the president of the Shiv Sena, Mr. Uddhav Thackeray. In the meeting, it was resolved to remove Mr. Shinde as the group leader of the SSLP and appoint Mr. Ajay Chaudhary. The resolution was signed by Mr. Uddhav Thackeray in his capacity as the president of the party on the official letterhead of the office of the SSLP. Then, having dealt with that, we say the Speaker was aware of the emergence of two factions in the Legislative Party on 3 July 2022 when he appointed a new whip and a new leader, because the resolution of the respondents specifically mentions that a split had occurred due to prevailing dissatisfaction in some MLAs of the Shiv Sena. Further, the fact that there were two resolutions appointing two different whips and two different leaders would no doubt have resulted in the Speaker inferring that there were two factions of the Shiv Sena. The Speaker, on taking cognizance of the resolution passed by the faction of the SSLP led by Mr. Shinde, did not attempt to identify which of the two persons who were nominated, namely Mr. Prabhu or Mr. Gogaole, were authorized by the political party. In a contentious situation such as this, the Speaker should have conducted an independent inquiry based on the rules and regulations of the political party to identify the whip authorized by the Shiv Sena political party. For the reasons detailed in the preceding paragraphs, the Speaker must only recognize the whip appointed by the political party. The decision of the Speaker recognizing Mr. Gogaole as the chief whip of the Shiv Sena is illegal because the recognition was based on the resolution of a faction of the Shiv Sena legislature party
without undertaking an exercise to determine if it was the decision of the political party. Harmonizing the 10th schedule with paragraph 15 of the symbols order. This court cannot accept the solution proposed by the petitioners and lay down a constitutional sequence. To hold that the Election Commission of India is barred from adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order until the final adjudication of the disqualification petitions under the 10th schedule would be in effect to indefinitely stay the proceedings before the Election Commission of India. This is because an order of the Speaker attains finality only after all avenues for appeal have been exhausted or are barred by the passage of time. The time that it would take for an order of the Speaker to attain finality is uncertain. The Election Commission of India is a constitutionally entrenched institution which is entrusted with the function of superintendence of and control over the electoral process. The ECI, which is a constitutional authority, cannot be prevented from performing its constitutional duties for an indefinite period of time. Proceedings before one constitutional authority cannot be halted in anticipation of the decision of another constitutional authority. In arriving at this decision, it is not necessary for the ECI to rely on the test of majority in the legislature alone. In cases such as the present one, it would be futile to assess which group enjoys a majority in the legislature. Rather, the Election Commission of India must look to other tests in order to reach a conclusion under paragraph 15 of the symbols order. The other tests may include an evaluation of the majority in the organizational wings of the political party, an analysis of the provisions of the party constitution, or any other appropriate test. Then we deal with the judgment in Sadiq Ali's case, and having dealt with the judgment, we say the disqualification proceedings before the Speaker cannot be stayed in anticipation of the decision of the ECI. In cases where a petition under paragraph 15 of the symbols order is filed after the alleged commission of prohibitory conduct, the decision of the ECI cannot be relied upon by the Speaker for adjudicating disqualification proceedings. If the disqualification petitions are adjudicated based on the decision of the ECI in such cases, the decision of the ECI would have a retrospective effect. This would be contrary to law. The question before this court is, what is the impact of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule? This question has arisen in the context of both the factions of the Shiv Sena claiming to be the real Shiv Sena. In effect, this points to the existence of a split within the SSLP. However, no faction or group can argue that they constitute the original political party as a defense against disqualification on the ground of defection. The inevitable consequence of the deletion of paragraph 3 of the 10th schedule is that the defense of a split is no longer available to members who face disqualification proceedings. In cases where a split has occurred in a political party or in a legislative party, members of neither faction may validly raise the defense that they are the political party in the event that each faction files petitions for the disqualification of members of the other faction. The defense sought to be availed of must be found within the 10th schedule as it currently stands. The deletion of paragraph 3 impacts the proceedings under paragraph 2(1)(b) as well. When there are two whips appointed by two or more factions of the political party, the Speaker, as held in the preceding section of the judgment, decides which of the two whips represents the political party. Thus, the adjudication of the Speaker on whether a member must be disqualified under paragraph 2(1)(b) would also depend on the decision of the Speaker recognizing one of the two or more whips. We accordingly answer the question referred to us as noted in paragraph 32F of the judgment. To avert a no confidence motion, the incumbent government may not advise the governor to convene a session of the assembly, and the Speaker may adjourn the sitting of the House to prevent voting for granting leave to move a motion of no confidence. If the Speaker and the government attempt to circumvent a no confidence motion, the governor would be justified in exercising the power under Article 174 without the aid and advice of the Council of Ministers.
Now we have dealt with the role of the governor in the present case. The petitioners have urged that the governor was not justified in reaching the conclusion that he did on the basis of the resolution dated 21 June 2022 because 1. The 34 MLAs belonging to the Shiv Sena did not express their intention to exit the Mahavikas Aghadi government, and 2. The MLAs who signed the resolution constituted a faction of the SSLP. Although the resolution dated 21 June 2022 specifies that some MLAs of the SSLP were dissatisfied with the functioning of the MVA government, it does not record their intention to withdraw support from the government. Among the 34 MLAs who signed the resolution dated 28 June 2022, a few were also ministers in the government. On the basis of this resolution, the governor concluded that a majority of the Shiv Sena MLAs have given a clear indication that they intend to exit from the Mahavikas Aghadi government. The assembly was not in session when Mr. Fadnavis and 7 independent MLAs wrote to the governor. However, there was no attempt made by the members of the opposition parties to issue a notice for a no-confidence motion against the incumbent government. The governor had no objective material on the basis of which he could doubt the confidence of the incumbent government. The resolution on which the governor relied did not contain any indication that the MLAs wished to exit from the MVA government. The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test. The governor ought to apply his mind to the communication or any other material before him to assess whether the government seemed to have lost the confidence of the House. We use the term opinion to mean satisfaction based on objective criteria as to whether he possessed relevant material and not to mean the subjective satisfaction of the governor. Once a government is democratically elected in accordance with law, there is a presumption that it enjoys the confidence of the House. There must exist some objective material to dislodge this presumption. The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. Even if it is assumed that the MLAs implied that they intended to exit from the government, they only constituted a faction of the SSLP and were at most indicating their dissatisfaction with the course of action adopted by their political party. The political imbroglio in Maharashtra arose as a result of party differences within the Shiv Sena. However, the floor test cannot be used as a medium to resolve internal party disputes or intra-party disputes. Dissent and disagreement within a political party must be resolved in accordance with the remedies prescribed under the party constitution or through any other methods that the party choose to opt for. There is a marked difference between a party not supporting a government and individuals within a party expressing their discontent with the party leadership and functioning. The governor is the titular head of the state government. It's a constitutional functionary who derives his authority from the constitution. This being the case, the governor must be cognizant of the constitutional bounds of the power vested in him. He cannot exercise a power that is not conferred on him by the constitution or a law made under it. Neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party, particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wished to withdraw their support to the government on the floor of the House. It is true that the letter dated 25 June 2022 sent by some MLAs of the Shiv Sena to the governor requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security mentions that those MLAs no longer wanted to be a part of the corrupt MVA government. However, this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the House. Nothing in any of the communications relied upon by the governor indicates that the dissatisfied MLAs from the Shiv Sena intended to withdraw their support to the Chief Minister and the Council of Ministers. At the highest, the various communications expressed the fact that a faction of the MLAs disagreed with some policy decisions of the party. The course of action they wished to adopt in order to air their grievances and redress them
was at the time the floor test was directed to be conducted uncertain. Whether they would choose to enter it deliberations with their colleagues in the House or in the political party, or mobilize the cadres, or resign from the assembly in protest, or opt to merge with another party was uncertain. Therefore, the governor erred in relying upon the resolution signed by a faction of the SSLP MLAs to conclude that Mr. Thackeray had lost the support of the majority of the House. Second, the governor relied on the letter dated 25 June 2022 from 38 SSLP members, claiming that the security provided to them and to their families was illegally withdrawn. The MLAs claimed that the security was withdrawn to coerce them into continuing to support the MVA government against their free will. Therefore, they demanded the restoration of the security provided to them and to their family members. After receiving the letter, the governor issued directions to the state police to provide adequate protection to the MLAs, the members of their families, and their property. However, the lack of security to the MLAs has no bearing on the question of whether the government enjoys the confidence of the House. The appropriate response of the governor in such cases is to ensure that security that they were lawfully entitled to continues to be provided to them if it has been removed. This was an extraneous reason that was considered by the governor. The third communication that the governor relied on is the letter dated 21 June 2022 addressed by Mr. Eknath Shinde to the Deputy Speaker, stating that the appointment of Mr. Ajay Chowdhury was illegal. The governor may not inquire into or express an opinion on the validity of proceedings of the legislature. That is exclusively within the domain of the legislature itself, or in certain circumstances discussed in the previous segment of this judgment, within the domain of courts. The discretionary power of the governor under Article 163 of the Constitution is limited to situations where a constitutional provision expressly provides it, or where the Constitution cannot be construed otherwise than to grant such discretion. Hence, the governor ought not to have relied on the letter dated 21 June 2022. In any event, the contents of the letter did not indicate anything to suggest that the then Chief Minister, Mr. Thackeray, had lost the confidence of the House. Finally, the governor relied on the letters written by Mr. Fadnavis and 7 independent MLAs, calling upon him to direct Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House. First, both Mr. Fadnavis as well as the 7 MLAs could have well moved a motion of no confidence. Nothing prevented them from doing so. Second, a request by some MLAs for a direction to the Chief Minister to prove his majority does not, taken alone, amount to a relevant and germane reason to call for a floor test. There must be some objective material in addition to a mere request to call for a floor test. In the present case, the governor did not have any objective material before him to indicate that the incumbent government had lost the confidence of the House and that he should call for a floor test. And the exercise of discretion by the governor in this case was not in accordance with law. Now on relief. Relying on Bommai and Nabam Rebia, the petitioners argue that this court has the power to restore the status quo ante and rule that the government with Mr. Thackeray as its chief minister is to be reinstated. However, this argument does not account for the fact that Mr. Thackeray did not face the floor test on 30 June 2022 and submitted his resignation. This court cannot quash a resignation that has been submitted voluntarily. Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of the chief minister, this court could have considered the grant of the remedy of reinstating the government headed by him. The order of this court dated 29 June 2022 held that the outcome of the trust vote to be conducted on 30 June 2022 shall be subject to the final outcome of this batch of petitions. Since the trust vote was not held, the question of it being subject to the final outcome of these petitions does not, therefore, arise. Conclusions. In view of the discussion above, the following are our conclusions. A. The correctness of the decision in Nabam Rebia is referred to a larger bench of 7 judges. B. This court cannot ordinarily adjudicate petitions for disqualification under the 10th schedule in the first instance. There are no extraordinary circumstances in the instant case that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate the disqualification petitions. The Speaker must decide the disqualification petitions within a reasonable period. C. An MLA has the right to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for their disqualification,
the validity of the proceedings of the House in the interregnum is not subject to the outcome of the disqualification petitions. D. The political party and not the legislature party appoints the whip and the leader of the party in the House. तो शिवसेना वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुना रही है। बहुत बड़ी टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की ओर से इस फैसले में आई है कि अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा नहीं दिया होता तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती थी। तो ये एक बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई, संविधान पीठ की ओर से कही गई है कि क्या अब सवाल उठता है मनोरंजन की, क्या उद्धव ठाकरे ने गलती की थी फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देकर? राजनीतिक रूप से यदि मैं कहूं तो उद्धव ठाकरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। यदि वो हाउस को फेस करते, यदि वहां पे उनकी सरकार गिर जाती, क्योंकि अब जो फ्लोर टेस्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो गलत था, तो ऐसे में अब जब उन्होंने हाउस को फेस ही नहीं किया तो उनकी सरकार को दोबारा स्थापित करने का कोई चांस नहीं बनता है। और जो संविधान पीठ का फैसला आ रहा है, जो पढ़ करके सुना रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, उसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो उस वक्त थे, उनके कई फैसलों पर भी गंभीर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की ओर से खड़े किए गए हैं और जिस तरह से फ्लोर टेस्ट का आदेश राज्यपाल ने दिया था उसको भी गलत ठहराया है संविधान पीठ ने। आइए सुनते हैं आगे क्या कह रहे हैं। Disqualification proceedings. The Speaker would prima facie determine who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions and a paragraph 2(1) of the 10th schedule, where two or more factions claim to be that political party. H. The governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor of the House because he did not have reasons based on objective material before him to reach the conclusion that Mr. Thackeray had lost the confidence of the House. तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को जो है फ्लोर टेस्ट पर जाना चाहिए था, उन्होंने वो फ्लोर टेस्ट पर नहीं गए और जिससे कि जो है उनको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल पे टिप्पणी की है, जो स्पीकर है उस पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नर साहब के बारे में भी काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है कि किस ढंग से गवर्नर साहब ने जो उन्होंने फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी थी वो गलत था। ये एक तरह से कई मायनों में ऐतिहासिक फैसला है आज की संविधान पीठ का मनोरंजन, क्योंकि कई बातें जो लगातार हम देखते हैं कि विवाद उठते आए हैं कि जब राजनीतिक पार्टियों में आपसी मतभेद के चलते या गठबंधन के चलते जब विवाद होते हैं तो उनका हल किस तरह से निकाला जाए। जो स्पीकर होता है वो किस गुट का होता है, क्या स्पीकर गुट के हिसाब से फैसला करता है, व्हिप किस तरह से बदला जाए न बदला जाए, इसको लेकर के भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि व्हिप का जो निर्णय है वो राजनीतिक दल करेगा, ना कि जो लेजिस्लेचर पार्टी होती है वो करेगी। एक और बात कही है कि स्पीकर की अयोग्यता के मामले पर समय सीमा में निपटारा करेंगे, यानी ये मामला जो है वो अभी और आगे तक। ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, लेकिन समय सीमा क्या होगी, क्या ये डिफाइन किया गया है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि ये बात तो कई बार कही जा चुकी है कि राज्य के जो स्पीकर होते हैं वो लंबे समय तक इन मामलों को, अयोग्यता के मामलों को लटका करके नहीं रख सकते। एक समय सीमा में उन्हें तय करना चाहिए, लेकिन क्या समय सीमा होनी चाहिए, इस पर क्या कहा, ये भी अभी देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात गवर्नर के ऊपर उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पार्टी अलग हो जाती है तो आप वैसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कानून आपको नहीं देता है। गवर्नर इस तरह से पॉलिटिकल एरिना में नहीं आ सकते हैं जहां एक ही पार्टी के दो गुटों में मतभेद हो। ये काम जो है गवर्नर का नहीं है। एक जो बड़ी बात है मनोरंजन की, सवाल ये उठ रहा था सुबह से मेरे दिमाग में कि क्या घड़ी की सुइयों को उल्टा किया जा सकता है, जैसे कि उत्तराखंड में किया गया था या कुछ अन्य राज्यों में भी, अरुणाचल में किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, वो नहीं। तो उसी का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि अगर उद्धव ठाकरे बहुमत परीक्षण से पहले इस्तीफा नहीं देते तो शायद इस बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया इसलिए अब उसमें दखल नहीं दिया जाएगा। यानी जो शिंदे सरकार है वो बनी रहेगी, उस पर अभी कोई खतरा फिलहाल इस तरह से इस वाले पक्ष को लेकर के तो नहीं दिख रहा है। जब 16 विधायकों की बात आएगी तब उस पर क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां चाहे स्पीकर के अधिकार को लेकर हो, चाहे राज्यपाल के अधिकार को लेकर हो, या फिर बहुमत परीक्षण को लेकर हो।
role of the governor, and most important, देखिए, निश्चित तौर पर 20 जून को पहली बार बगावत की थी एकनाथ शिंदे ने, और उसके बाद उन्होंने जो भी फैसले लिए और जिस तरह से गवर्नर ने फ्लो टेस्ट कराया, जिस आधार पर फ्लो टेस्ट कराया, और उसके बाद का जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम था पिछली सरकार को गिराने का, नई सरकार के गठन का, उस दौरान जो बड़े फैसले लिए गए एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, उनको अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और मुझे लगता है कि गवर्नर की सबसे ज्यादा आलोचना की और कहा है कि उनके पास कोई आधार नहीं था कि वो सबसे बड़ी बात जो ऑपरेटिव पार्ट है हिमांशु, सबसे बड़ा ऑपरेटिव पार्ट है कि शिंदे सरकार बनी रहेगी। शिंदे सरकार को सरकार बनाने के लिए न्योता देना वो इलीगल नहीं है। शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। आज के जजमेंट से ये बात निकली है। जो विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की बात है उस पर अलग से बात की जाएगी। क्या हम माने ये? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, पर एक जो सवाल अपनी तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान रखी गई थी, उनमें से अधिकतर जो उनकी दलील थी उसको अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें बहुत साफ शब्दों में शुरुआत में ही मुझे लगता है जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि निबाम राबिया मामले को हमें आज के फैसले में 16 विधायकों का क्या होगा, ये सुबह से सवाल पूछा जा रहा था, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो इन 16 विधायकों के भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर यहां से सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि जो 16 विधायक शिवसेना, जिनमें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है, मनोरंजन, उनके भविष्य का फैसला मौजूदा स्पीकर करेंगे, वो मौजूदा स्पीकर करेंगे। और मौजूदा स्पीकर जो है वो शिवसेना गुट से है। अभी वो विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। सुबह सोहित की उनसे बात भी हुई थी, सोहित से जो हमारे सहयोगी उन्होंने उन पर चर्चा की थी, लेकिन अब वो विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। और ये एक बड़ी खबर है कि स्पीकर फैसला करेंगे इन 16 विधायकों पर, लेकिन शिंदे सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि घड़ी की सुइयां उल्टी नहीं की जा सकती है। संजय राउत कुछ बोल रहे हैं, वहां चलते हैं। तर येऊ द्या, व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती आपली भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे। जर घटनेनुसार राज्य देश चालणार असेल, लोकशाहीनुसार चालणार असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांनी आपण कायद्याच्या संविधानाच्या बाजूने आहोत की घटनाबाह्य बेकायदेशीर लोकांच्या बाजूने आहोत, हे कायदेपंडित आहेत विधानसभा अध्यक्ष, त्यांनी पाहायला पाहिजे। माझ्या हिशोबानं आमच्या Mr. Thackeray there was a saving grace where there were, words were used against the governor and the speaker's role, but that doesn't give him much of a result. So the Shinde government survives. आता मराठीत मी सांगतो, नबम रेबियाचं जे मॅटर आहे, नबम रेबिया पुरतं ते हायर बेंचला त्यांनी फॉरवर्ड केलेलं आहे, पण आणि त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर पण बरंच त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत आणि सांगितलेलं आहे फ्लोअर टेस्ट बोलवणं चुकीचं होतं, पण उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळं आता कोश्यारींना ते मग त्यांना एकनाथ शिंदेंना बोलवावंच लागलं। त्यामुळं त्यांनी हे पण सांगितलंय की व्हिप अपॉइंट करायचा अधिकार हा पॉलिटिकल पार्टीचा असतो, त्यामुळे सुनील प्रभूच त्यावेळेस व्हिप होते। पण आता जर आपण बघितलं, इलेक्शन कमिशननी शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदेंना दिल्यामुळं व्हिप हे भरत गोगावलेच असतील आणि स्पीकरला त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही रिझनेबल टाइम मध्ये याच्यावर या 16 जणांवर निर्णय द्या। रिझनेबल टाइम काहीच डिफाईन नाही झालेला, तो 1 महिना असेल, 2 ते स्पीकरवर आहे रिझनेबल टाइम, त्यांनी काय वेळ मर्यादा दिलेली नाहीये, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचं गव्हर्नमेंट हे सर्व्हाइव्ह होईल। भरत गोगावले यांची नियुक्ती जी होती ती बेकायदेशीर, हो, भरत गोगावलेंची नियुक्ती त्यावेळेस बेकायदेशीर होती, पण त्याच्यानंतर आता शिवसेने पक्षाचं हेच सबसे बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे की सरकार बची हुई है। इससे पहले कि सुनील सिंह के पास आप जाएं, 2 बातें जो हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने हमें भेजी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एकनाथ शिंदे को जो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, यानी बहुमत परीक्षण के लिए बुलाया राज्यपाल ने, वो राज्यपाल का फैसला सही था। वो इसलिए सही था क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे वो इस्तीफा दे चुके थे, वो यानी वो मान चुके थे, ये एडमिशन था उनका कि उनके पास बहुमत नहीं है। और मुझे लगता है कि यही फैसला उनके खिलाफ भारी पड़ा है, वरना आज ये भी हो सकता था कि उन्हें राहत मिल जाती। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से यदि इसकी जो व्याख्या की जाएगी तो कहा जाएगा कि किस ढंग से, यदि आपको हमेशा हाउस फेस करनी चाहिए, आपको विधानसभा में आपके खिलाफ सबने किया। हाँ, वाजपेयी जी ने क्या, चाहे एयरपोर्ट से वो हार गए थे, उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण के बूते पर आप जानते हैं कि फिर अगले 5 साल के लिए वो प्रधानमंत्री बनकर के आए थे। वो हाउस फेस करना जो है वो जरूरी था। सबने जो है एडवाइस किया था उद्धव ठाकरे को
वकीलों ने एडवाइस किया था कि आप हाउस फेस कीजिए, लेकिन उद्धव ठाकरे बिना हाउस फेस किए हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज के दिन वही चीज उनके लिए भारी पड़ गई है। सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील, किस तरह की हलचल है इस फैसले के बाद, क्योंकि अब पूरा दारोमदार स्पीकर के पास आ गया है। सोहित ने सुबह स्पीकर से बात भी की थी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि 16 जो विधायक हैं जिनमें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, उनके भविष्य का, उनके भाग्य का फैसला अब स्पीकर के हाथों में छोड़ दिया गया है और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि घड़ी की सुइयां जो है वो नहीं पलटी जाएंगी, चाहे वो बहुमत परीक्षण का फैसला तब के राज्यपाल कोश्यारी का गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि उद्धव ठाकरे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए उसमें अब कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो फैसला है ये राहत है बहुत बड़ी शिंदे फडणवीस सरकार के लिए, क्योंकि विधायकों की सदस्यता पर जो फैसला था वो स्पीकर के हाथ में दे दिया गया है और स्पीकर भी इन्हीं की पार्टी का है। हालांकि उन्हें समय दिया गया है, लेकिन समय कितना दिया है ये तय नहीं किया गया है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो सब स्पीकर पे छोड़ा गया है कि समयबद्ध तरीके करें। तो अब बहुत बड़ी राहत है जो उम्मीद जताई जा रही थी, और खास करके जो बरोबर आहे, लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारनं राजीनामा द्यायला पाहिजे। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है वो शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचं दिसतं। अरे सोडा हो, कायम बेम कसलं आहे, गेलं ते सरकार। राव सर, आपने जो पॉइंट रखा है उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं देते तो ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार, नई सरकार बनाई, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। अब हमारे साथ जुड़ गए आशीष, इस पूरे फैसले को आप संक्षेप में समझाइए कि ये फैसला क्या कहता है, कहां उद्धव ठाकरे से गलती हुई है और इसके आगे के परिणाम क्या होंगे। 16 विधायकों के पर जो तलवार लटकी हुई थी, अब वो स्पीकर के जिम्मे है, जो मौजूदा स्पीकर है। जी बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर हैं वही डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात बाबा हमें ये देखना है कि ज़मीनी स्थिति कोई नहीं बदली है, शिंदे सरकार वहाँ चलती रहेगी। और जो बैकफायर हुआ है वो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ है। सुनवाई के आखिरी दिन 5 जजों के संविधान पीठ ने ये सवाल उठाया था और कहा था कि आप अगर फ्लोर टेस्ट में हार जाते और उसके बाद हमारे पास आते तो हम आपको राहत दे सकते थे। आज उसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था और अब जब वो इस्तीफा दे चुके हैं तो पुरानी स्थिति बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फ्लोर टेस्ट का उन्होंने सामना भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चीज़ें चेंज होती, बदलती, हम राहत दे सकते थे कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते, लेकिन जब वो खुद अपनी इच्छा से इस्तीफा दे चुके हैं तो उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, बहाल नहीं किया जा सकता। 2 चीज़ें हमें और समझनी है। राज्यपाल पर बड़ी टिप्पणियां की है, कहा है पॉलिटिकल एरिना में नहीं घुसना चाहिए था, सिक्योरिटी की चिट्ठी आई थी, इंट्रा पार्टी ये विवाद था, उस पार्टी के भीतर के मतभेद को वो सदन में क्यों लेके आए। उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया वो पूरी तरह कानून के मुताबिक नहीं था, एक तरह से कानून के मुताबिक नहीं था, वो गलत फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में ये भी कहा है कि शिंदे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में राज्यपाल सही थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके थे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो सबसे बड़ा झटका जो लगा है इस पूरे केस में, जो पलट गया है पूरा केस, वो केस सिर्फ और सिर्फ इसलिए पलट गया है, बैकफायर हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में भले इसका फर्क ना पड़े, राजनीति में बहुत चीजें बदलती हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो एक छोटा छोटा सा कदम कितने बड़े परिणाम में बदलता है।
वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन पर रोक लग जाएगी, जिसमें कि राज्यपाल के कई मनमाने फैसले भी शामिल हैं। लेकिन इसमें मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा था कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इन 16 विधायकों के बारे में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो फैसला करे समय सीमा के तहत, लेकिन क्या ये समय सीमा तय की गई? क्योंकि ये बात तो पहले भी कई बार कही गई कि जो फैसले हैं वो एक समय सीमा में होने चाहिए, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया जाता। तो इसलिए एक छूट मिल जाती है स्पीकर्स को तमाम विधानसभाओं के कि वो अपने हिसाब से फैसला करें। जी देखिए अखिलेश, अभी जजमेंट पूरा आएगा तो उसमें देखेंगे, लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने, जस्टिस नरीमन की बेंच ने 3 महीने की समय सीमा तय की थी एक फैसले में कि स्पीकर को आइडली 3 महीने के भीतर फैसले दे देने चाहिए। तो यहाँ पर वो 3 महीने की समय सीमा भी है। अभी जब जजमेंट आ जाएगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ और भी लिखा हो, लेकिन 3 महीने की वो समय सीमा है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश ये सवाल बहुत बड़े हैं। जो संवैधानिक मुद्दे थे वो तो एकेडमिक मुद्दे हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं, लेकिन राजनीति में ज़मीन पर हकीकत क्या रहेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ें देखने वाली होती हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया है कि उसके सामने मुश्किल घड़ी थी। एक सरकार जो इस्तीफ़ा दे चुकी है, एक मुख्यमंत्री जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और दूसरे मुख्यमंत्री जो फ्लोर टेस्ट करके विश्वास मत का सामना करके आए हैं, उनको हटाकर दूसरे पहले व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना दें, ये एक बड़ा सवाल था। हमने कहा बार बार, उत्तराखंड और अरुणाचल में स्थिति अलग थी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, वहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की। लेकिन यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को सही ठहराया है जो शिंदे ने फेस किया था और विश्वास मत हासिल किया था। इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है बैलेंस करने की, लेकिन बताया है क्या क्या लैकुना हुए हैं, क्या क्या खामियां थी। बहुत बड़ी खामियां हैं। इंट्रा पार्टी, जो पार्टी के भीतर के मतभेद है, वो राजनीतिक दल के मतभेद हैं, उनको विधायक दल के यानी सरकार के भीतर मतभेद नहीं बनाना चाहिए था, सदन के भीतर का मतभेद नहीं मानना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी के भीतर आपस में जो मतभेद हैं उसका लिए आधार नहीं हो सकता है। राज्यपाल पॉलिटिकल एरेना में नहीं जा सकते हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, लेकिन मुद्दे भले ही तय हुए हैं, उससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ग्रुप को कोई राहत नहीं मिली है। मनोरंजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो आशीष जानकारी दे रहे हैं, जिसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते मुख्यमंत्री पद से तो उनको राहत मिल जाती, शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही भी गई है। लेकिन जो दूसरी बात मेरे दिमाग में आ रही है, सोहित भी हमारे साथ है, सोहित से भी पूछ सकते हैं ये बात। सोहित, उन्होंने केवल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। यानी एक तरह से पूरे तरह से वो हथियार डाल चुके थे। तो ये जो राजनीतिक फैसला उनका था, उस पर तो बहुत बड़ी टिप्पणी आज के इसके बाद हो गई है। जी बिल्कुल। और अगर आप उनके सहयोगी पक्षों से पूछें, उस समय महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी भी थे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। इसकी ये बात शरद पवार भी कर चुके हैं, और शरद पवार चाहते थे कि वो फ्लोर टेस्ट ले। जी, तो शरद पवार चाहते थे कि वो फ्लोर टेस्ट ले, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो नहीं करते हुए उन्होंने पहले ही फेसबुक लाइव कर इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के 2 दिन पहले आप देखिए कि जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, हम वर्षा बंगले के पास में हैं। जब एकनाथ शिंदे चले गए थे, तब उद्धव ठाकरे ने तभी कह दिया था कि मैं वर्षा छोड़कर जा रहा हूं, मुझे वर्षा में नहीं रहना है। हालांकि तभी उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन वो छोड़कर चले गए थे। कहीं ना कहीं तभी से उन्होंने मान लिया था कि उनकी विदाई हो सकती है। लेकिन जो उनके साथ में महाविकास आघाड़ी के 2 सहयोगी थे, वो चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट हो, फ्लोर टेस्ट पर वो भाषण दें, और उसके बाद जो फैसला होगा, क्योंकि अगर सरकार गिर भी रही है तो फ्लोर टेस्ट होकर गिरे, ताकि समझ में आए कि किसके पास कितनी ताकत है। यहीं पे बात आती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। हमने देखा यहाँ पे लोकसभा में किस ढंग से 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर रही थी, फिर भी वो लगे रहे, और उसके बाद दोबारा सत्ता में आए। कर्नाटक का मुझे याद है, बीएस येडियुरप्पा हर जगह फ्लोर टेस्ट लिया था उन्होंने। उन्हें पता था कि उन्हें तो बहुमत उनके पास नहीं, लेकिन आखिर उन्होंने अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी। उसका पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, जहां पे आज उद्धव ठाकरे नाकामयाब रहे, वरना दोबारा चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे होते आज।
बिल्कुल बाबा, और चाहे राज्यपाल की ओर से जिस तरह से फ्लो टेस्ट बुलाया गया हो वो गलत हो, लेकिन आपने अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को सुने कि अगर आप फ्लो टेस्ट के लिए जाते तो शायद उस समय सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन भी करता, लेकिन क्योंकि आप फ्लो टेस्ट के लिए गए नहीं और स्वैच्छिक, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वैच्छिक इस्तीफा आपने दे दिया, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया इस्तीफा देने के लिए या आपने इस तरह से किया, या अगर शरद पवार की भी बात आपने नहीं मानी या विपक्ष से भी आपने जो आपके साथ थे वो वरिष्ठ थे, शरद पवार 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों की समझ है, लेकिन उनसे चर्चा ना करते हुए जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया वो उनके खिलाफ यहाँ पर जाता है, वो जल्दबाजी हुई है और इसलिए उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता है, चाहे गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाया गया हो। अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये हमारी नैतिक जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो हम आपकी सरकार बहाल कर देते, तो इसको नैतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है और ये भी कह रहे हैं कि जो अभी सरकार है वह संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये भी बात संजय राउत कह रहे हैं। जी देखिए, अभी सरकार या इन सरकार के जो 16 विधायकों के भविष्य का फैसला है वो स्पीकर कर सकते हैं और इसलिए सरकार का भविष्य स्पीकर के हाथ में है। और स्पीकर का से जब कल हमने बातचीत की, उनका कहना है कि सरकार मेजॉरिटी में है, हम दोनों पक्षों को समय देंगे, वो पक्ष हमारे सामने आए, अपनी अपनी बात रखें, जिसके बाद ये फैसला होगा, ये टाइम बाउंड तरीके से होगा। अब संजय राउत हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के दूसरे नेता हों, वो कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे के लेकर जो कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर वो फोकस ना करें कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना था। उनका फोकस अब इस चीज पर है कि राज्यपाल ने किस तरह से गलत किया या फिर फ्लो टेस्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन बॉटम लाइन तो यही है कि आप चाहे कुछ भी कहें कि ये मॉरल विक्ट्री की बात कहें या जो भी चीज़ कहें, जो आखिरी बात है वो ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष में रहेंगे। शिवसेना का जो नाम और चुनाव चिन्ह है वो फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। तो उनके पास जाहिर सी बात है कि वो उस पॉइंट पर फोकस ना करते हुए बाकी सारे पॉइंट पर फोकस करें। लेकिन बॉटम लाइन इसमें यह है, जो बाबा आपने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी यहाँ पर दिखानी चाहिए थी। अगर आपके हाथ से सरकार गिर भी रही है तो आप फ्लो टेस्ट के लिए जाते, तो अगर अब इसके बाद में चर्चा होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता या चीज़ें आगे बढ़ती। लेकिन आपने स्वैच्छिक होकर जब आपने इस्तीफा दे दिया, आपने अपने सहकर्मियों की, आपने सहयोगी पार्टियों से भी बातचीत नहीं की, ऐसे में उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी मर्जी के वजह से हुआ क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल उठना लाजमी है और वही फैसला पर सवाल उठ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये कहा गया, लेकिन शरद पवार तो उसी समय से कह रहे थे कि हम सभी शॉक थे, उन्होंने चर्चा बिना किए ये फैसला लिया और फेसबुक लाइव करके इसका ऐलान दूसरा ये था। दूसरा राज्यपाल को लेकर सवाल है, जो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे वो तो अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़कर चले गए थे, इस्तीफा दे दिया था, कह दिया था कि वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं। एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने अपने फैसलों से, अपने बयानों से विवाद खड़े किए, जाहिर सी बात है कि उनके लिए आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये और बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2-3 अहम चीज़ें इसमें कही गई हैं कि एक पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने कहा कि वो पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, पॉलिटिकल स्टैंड, उससे सहमत नहीं है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं या पार्टी उनके पास है। तो ऐसे में राज्यपाल के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था कि वो इस तरह से फ्लो टेस्ट बुलाए, ये एक चीज़ कही गई। अब इसी पर एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो या फिर कांग्रेस हो, वो फोकस करेंगे, लेकिन इस पर फोकस जरूर किया भी जाएगा। राज्यपाल ने किस तरह से भूमिका ली उस पर भी फोकस किया जाएगा। भरत गोगावले को जिस तरह से चीफ व्हिप को माना गया उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर तब सही होती या इससे उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास आघाड़ी को तब फायदा होता अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता और वो फ्लो टेस्ट करते। जो हम बात कर रहे हैं, मॉरल विक्ट्री कह रहे हैं, जो लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि गेंद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में चली गई है और वो आज विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। आज सुबह विदेश यात्रा पर जाने से पहले सोहित ने उनको पकड़ लिया था। सोहित से क्या बात उनकी हुई है, आइए सुन लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में सुनाएंगे क्योंकि लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो था। लेकिन सबसे बड़ी बात है अखिलेश की, कोश्यारी साहब जो है भारतीय राजनीति में याद किए जाएंगे कई ऐसी लंबे समय तक। बहुत लंबी फहरिस्त है ये। फहरिस्त जो है ये बनती जा रही है, वो चाहे रोमेश भंडारी हो, चाहे सैयद सिप्ते रजी हो, इस तरह की जो फहरिस्त है राज्यपाल पहले रात में ओथ कराई थी वो, और उसके बाद जो लगातार वो उन्होंने फैसले लिए हैं और आज की टिप्पणी के बाद उनको पर एक चीज जरूर है कि जब उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही हैं। उन्होंने पहले कहा कि आपको फ्लो टेस्ट
का जो फैसला आपने कराया था वो गलत था, फिर बाद में ये भी बोला कि जब शिंदे के लिए आपने कराया तो वो सही था। तो दोनों बातें हैं। तो ऐसा नहीं कि एक तरफ तब उनको मार पड़ी हो, थोड़ी थोड़ी उनको राहत भी मिली है। ऐसा नहीं कि सारा ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके हर कदम पर सवाल उठाया। लेकिन राज्यपालों को लेकर आज जो ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया है, एक मिसाल बननी चाहिए, क्योंकि राज्यपालों के ऊपर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, स्पीकर्स के ऊपर भी लगातार प्रश्न उठते हैं कि वो लंबे समय तक के लिए टाल करके रखते हैं, कोई फैसला इसका मतलब जो आशीष ने कहा कि जो संविधान पीठ का फैसला होता है वो एकेडमिक रूप से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गवर्नर साहब के रोल पे, स्पीकर के रोल पे, और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है। सब बॉटम लाइन तो यही है ना, बिल्कुल। और बॉटम लाइन ये है कि शिंदे सरकार बची हुई है, 16 विधायक जिस पर लेकर के बहुत कयास लग रहे हैं, उसका फैसला स्पीकर करेंगे, क्योंकि सब खुश है इसमें। आज जो फैसला आया सब खुश है, सब इसको अपनी अपनी जीत बताएंगे। जो उद्धव गोटे वो बोलेगा कि देखिए हमारी नैतिक जीत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार को बहाल करने पर विचार हो सकता था, तो इसलिए हमारी नैतिक जीत हुई, क्योंकि उनकी सरकार बच सकती थी, और ये जो भी मौजूदा सरकार है ये गैर कानूनी है। शिंदे सरकार और शिंदे गुट ये कह सकता है कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि जो हमारा बहुमत परीक्षण का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। बीजेपी ये कह सकती है कि जो तमाम अनिश्चितताएं थी सरकार के भविष्य को लेकर वो अब दूर हो गई हैं, और जो पहले से कहते आ रहे थे कि विधायकों की अयोग्यता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को ही फैसला करना चाहिए, वो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। तो सब खुश है, सबकी जीत हो गई, किसी की हार नहीं हुई, ये सब पार्टियां कह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में कोई स्थिरता नहीं है। अब जो है जितना भी कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है, और जो सरकार अपना काम कर सकती है, और आने वाले दिनों में जो जितने भी संशय की बादल थे वो आज के फैसले के बाद छट चुका है। अब स्पीकर साहब जब करेंगे तब करेंगे, उनके पास 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, दोनों की 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज का जो फैसला आया है इस पर दोनों ही नेता अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से हमें मिल रही है महाराष्ट्र से, जिसमें कि दोनों ही वरिष्ठ नेता जो है सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस फैसले पर, आज के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी हाँ, इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का।